Skeptic Show. In this episode, I had the pleasure of talking to Lakshya. Lakshya has an Instagram page with the name Ambedkarite Marxist, जहाँ पर वो social and political issues को cover करते हैं. He has also completed his MBA from IIM. Now coming back to the episode, in this episode we talked about a bunch of stuff. We talked about Marxism, we talked about how do we judge historical figures, how do we judge Ashoka, how do we judge Gandhi, and how do we judge Mughal rulers. We talked about reservation and why he thinks EWS reservation is discriminatory. We talked about God, we talked about meaning and how do we find meaning and purpose in this meaningless world. And at the very end, we talked about prostitution. I had a lot of fun talking to him, and I hope you will enjoy this conversation. The episode with Laksh begins in 3, 2, 1, 0. Thank you so much, Laksh, for joining me on this show. I am really grateful to you. मैंने आपके content को बहुत ही ज़्यादा consume किया है, so it is a fan moment for me. So how are you feeling today? Yeah, thank you, Shubham. That was a good intro. And yeah, so my content, it's gonna reach so many people कि दूर दूर से लोग they'll read my content, they'll understand. उतना पहुंच होगा. I never thought about that when I started my page. It was always started as 50 100 लोग देखेंगे. वो भी I was happy with even if 100 people see it. But now I'm happy that it's getting the spread it deserves. So that's feels good. Well, you are doing a fantastic job क्योंकि आपके पेज को ना मेरे एक राइट विंगर फ्रेंड ने रिकमेंड किया था. So even right wingers are recommending my page. That means okay, I'm doing something right. Yeah. Yeah. So my objective with my page was obviously to be honest, I am a left person only. Clearly, Yeah. I don't hide that fact. I am from the left, but then I try to be as much objective as possible. Facts and reality से जुड़े होना चाहिए हमें. जब लोग facts को भूल के they go behind agenda फैलाना है, narrative फैलाना है, that is when चीजें गड़बड़ हो जाती है. Right भी हो, left भी हो. तुम अगर if you stick to the facts, you'll reach the right place. That's my opinion. Well, you call yourself an Ambedkarite Marxist. So can you please explain Marxism to me? क्योंकि I have no idea what it is. Okay. So this person Karl Marx in Germany. So he was noticing कि अपने यहाँ the society is changing rapidly. Now, how is it changing rapidly? There's something which was उस time का the new economic arrangement called capitalism. पहले people used to work in feudalism. Feudalism में क्या होता है? You have these peasants जो अपने जमीन में काम करते हैं. They grow whatever they grow and they give a share to it to the landowner. Basically, जो royal aristocrats के होते हैं. But now with capitalism, you have industrialization. You have factories. And पहले जो production जैसे for example मान लेते table. You had a carpenter wood काट के लाता था, वो एक table manually बनाता था. But with industrialization, you have mass production of goods. पहले before capitalism, before industrialization, you had the problem of scarcity. Production बहुत कम होता था. Capitalism के बाद you have the problem of abundance. खाना we have abundant. Production we have abundant. Whatever goods, tables, chairs, machines, everything is produced mass में is abundant. But then the workers there, they are working day and night. उस time you had no workers protections. Workers were working 16 hours. 8 साल के बच्चे used to work in factories. Factories conditions really bad. Producing so much. You had industries in Europe who used to produce for the whole world's population. इतना production हो रहा है, इतना पैसा भी generate हो रहा है, but all the wealth which is generated was going to a few people's hands, the factory owners, and the workers weren't getting their fair share. So Marx identified कि देखो ये system जो है production में बहुत बढ़िया, wealth generation करता है, production पूरा दुनिया के लिए ये संभाल सकता है, industrialization and capitalism. But then the biggest flaw is this wealth which is generated, it is being concentrated in the hands of few rich and powerful, right? Even in the modern day, if you see, you have the Ambanis and Adanis of India. They have big corporations. इतने लोग काम करते हैं, and whatever resources they extract, it is from what? हमारा जमीन से forest से निकालते हैं. हमारे जैसे लोग जो engineering पढ़ने के बाद हमारा labor से लेते हैं. They might be paying us 30,000, 40,000, 50,000, but हमारा labor से जितना वो value extract करते हैं, that is way more than they pay us, right? So these guys, they can sit at, I know rich people जिनके पास इतने company के shares हैं, they can sit at home, do nothing, and still make shit ton of money. तो सिस्टम ऐसा बना हुआ है. जो रिच होता है वो रिच होते ही जाता है, एंड जो पुअर है अपने सैलरी के बेसिस पे ही वो रिटायर तक हो जाएगा. So what you ultimately have is a system where a handful of people who own the companies, who own the factories, they get extremely rich, and जो working class people होते हैं, जो companies के अंदर employees बन के काम करते हो, factories में हो, भले ही वो IT sector के employees हो, वो अपने सैलरी के बल पे ही रहेंगे, एंड उनका इनकम उतना ज्यादा ग्रो भी नहीं करेगा. ज्यादा से ज्यादा जिंदगी में दो चार प्रमोशन दे देंगे, 50,000 की जगह 1 लाख का सैलरी पकड़ा देंगे,
बट तुमको अगर वो 1 लाख पे कर रहे हैं ना, तुमसे उनको मुनाफा और भी कितना गुना होता होगा जो तुम्हें नहीं मिल रहा है. So that was what Marx identified in the system. कि देखो he made many predictions कि future में it will get even more specialized. Sectors will get specialized, but then even the labor will get specialized. But then the capitalist लोग जो होते हैं, who own everything, they'll get even and even richer, and even countries का behavior will change. Okay, because capitalism will start in one country. वो country में सारा market वो खा लेगा. But it needs newer markets to sell products to. It will start expanding. वहाँ पे अपना they'll start production. वहाँ पे they'll start extracting natural resources. Then he also predicted you'll have richer countries and poorer countries, right? Just countries where you have more technology, they'll go to poorer countries, like say African countries, and start extracting resources there. वहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे, but मुनाफा तो उन्हीं के हाथ में होगा. So you'll have this global inequality come into place, and even within countries, you'll have this working class people and you have a capitalist class, where there's a big divide between these two. And as capitalism बढ़ते जाएगा, this divide between the rich and the poor, it's going to get greater and greater, right? And Marx predicted that there will be one day, future में, जब ये inequality इतना ज्यादा होगा कि वर्किंग क्लास के सारे लोग उनमें क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप होगा. दे विल रियलाइज कि देखो हमारे साथ धोखा हो रहा है. वी आर द वंस पुटिंग इन द वर्क, बट कोई और हमारा पैसे से खा के इज गेटिंग वेरी रिच. सो दैट टाइम यू विल सी अ ड्रास्टिक शिफ्ट. You will see something of a revolution, like a Marxist revolution, where people will realize this system won't work anymore. We need to have a fair means of distribution. That's why you have the word, workers' control of the means of production. जो बोलते हैं. Means of Yeah. production is basically the factories, the companies, and all of that. So the people who are working in the factories, they should be the ones जो company का profit से they should be able to enjoy. More like that. So that was what this is basic a gist of brief overview of Marxism, of how it originated and what it talks about. इंडिया में अभी भी मार्क्सिस्ट पार्टीज़ हैं बट उनका प्रेजेंस कुछ ठीक नहीं है. बट वो पॉलिटिकल जो भी इलेक्शंस होते हैं वो जीत नहीं पाती है. व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? So there is a lot of history behind Indian communist parties. India, before independence and during the independence struggle, communists played a very important role. You had people like Bhagat Singh who were communists, right? And you had the first Indian labor meeting in Kanpur, where you had the first Indian Communist Party also. And these guys were in touch with the Soviet Union. So you had a rich history. You had states like Bengal and Kerala, where obviously even post-independence, you saw communist parties come into power. But what issues happened in India, if you ask? So one of the major issues which happened was Indian communists, they looked for leadership from abroad. कि सोवियत यूनियन के जो स्टालिन है, लेनिन है, उनके आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे. तो द वन प्रॉब्लम व्हिच हैपेंड, साइनो सोवियत स्प्लिट हो गया था. चाइना का जो माओ थे एंड सोवियत यूनियन के द आइडियोलॉजीज वर दे वेंट इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस. These two countries stopped agreeing. So इंडिया में जो कम्युनिस्ट थे, they were in a split कि किसको फॉलो करें, माओ की आइडियोलॉजी फॉलो करें या सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी फॉलो करें. दैट वाज द स्प्लिट वेयर यू हैव सीपीआई एंड सीपीआईएम, है ना, दो सीपीआई सीपीएम होता है ना. दैट वाज द ओरिजिनल स्प्लिट. उस वहां इंटरनेशनल स्प्लिट के बेस पे इंडिया के पार्टी स्प्लिट हो गए थे. तो इसमें यू ओके. सॉ डिसयूनिटी इन द पार्टीज. So the thing is, before independence, we had like about 100 plus smaller workers unions who were communist ideology, red flag वाले पहनने वाले. After that, there was some consolidation, but consolidation में the basic premise was that कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर जो वन सेक्शन, दे वर लाइक लेट्स फाइट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, है ना. इंडिया को आजादी मिल गई है, अभी वी हैव अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लेट्स फाइट दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ही भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. वाज वन फैक्शन. द अदर फैक्शन वाज लाइक, सी दिस इंडिपेंडेंस इज अ फॉल्स इंडिपेंडेंस. वी हैड ब्रिटिश ऑपरेसर, अभी ब्रिटिश ऑपरेसर हट गए हैं, अभी इंडियन कैपिटलिस्ट ऑपरेसर है. द इंडियन स्टेट इज आल्सो कैपिटलिस्ट, वी हैव टू फाइट इट ऑन हेड्स ऑन. दैट वाज द अदर साइड. But then the other side realized it's not realistic to fight this Indian capitalist state head on. They also joined the system democratically. But again, these two Joe who wanted to fight the system head on, they were mostly Maoist. You have still certain Maoist wings जो अभी भी system को violently लड़ना चाहते हैं, who are the Naxals and so on. But then the other portion who were fighting democratically, they also existed. But one more problem happened was that during Indira Gandhi's time, India and the Soviet Union had very good relations geopolitically, and we had border conflict with China, we had border conflict with Pakistan. उस time पे we needed the Soviet Union's help. The Soviet Union ने it told Indian communist parties कि देखो, India is a good friend of ours, तुम लोग ज्यादा प्रोटेस्ट मत करो against the government, है ना, क्योंकि हमको इंडिया में डिसरप्शन नहीं चाहिए. We want a stable leadership. तो even in the Indian communist parties also there was a split. कि कोई कह रहे थे ओके द सोवियत यूनियन इज टेलिंग अस वी हैव टू फॉलो देम, इंदिरा गांधी को ज्यादा अपोज नहीं करेंगे. बट अदर पार्टीज वाज लाइक नो वो कौन होते हैं हमें बताने के लिए, हम इंडिया में क्या करें.
तो अभी घूम फिर के वी हैव मोर देन 60 प्लस कम्युनिस्ट पार्टीज इन इंडिया. सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज इन इंडिया कि इतने स्प्लिट हो गए हैं ना कि अगर ये सब जुड़ के एक साथ इफ दे ब्रिंग अ मूवमेंट बहुत स्कोप है, यूनाइटेड होके करते हैं. बट देन ये आइडियोलॉजिकल लाइन में, हिस्टोरिकल लाइन में इतने स्प्लिट हो गए, दैट्स वन इशू व्हिच स्टॉप्स अस. This is one major issue. The second major issue with Indian Communist parties is that, and it's a flaw with the way democracy works in India. Dekho, if you're a normal political party, you can get funding, right? हाँ. Yeah. You can go to the corporations. You can say, ki dekho, give us funds, and after election, we will pass favorable policy for you. Huh? तुमको सब्सिडी देंगे, तुमको जो देंगे. But communist parties, na, we can't do that. वो हमारे principles के against है. We have to depend on the people. We do promises for the people कि we'll give you better housing, better education and all that. But then again, we don't have the money to give, vote करने के बाद बिरयानी देने का and all that, which other parties do actually. तो वहाँ पे हम hamstring हो जाते हैं. So these structural disadvantages are there, especially monetary. इसमें देखेगा तो even if you have heard about this Kanhaiya Kumar, na, he had to bring his own AC into the CPI का office because see the thing is party has पैसा नहीं है, that's the thing. Look, I'm not an official party spokesperson. I'm telling you what based on what I know. क्या party वाले मेरे क्या पूछेगा? Yeah, it's a complicated scenario. But yeah. And even कन्हैया कुमार ने तो फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली. Yeah, true. So a lot of youth leaders India में, Kanhaiya Kumar हो, Jignesh Mevani हो, all of these people when they start out, they're all ऐसे radical, क्रांतिकारी, rebellious, right? They wanted to bring change. They go for communist parties and all that. But then उनको reality का एक झलक लगता है कि देखो इंडिया में if you want to win an election, जो ऑर्गेनाइज करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, जो पैसा चाहिए ना, वो सीपीआई डजंट हैव दैट रिसोर्सेज एंड ऑल दैट, है ना. मे बी इन सम प्लेसेस दे डू, केरला में दे डेफिनेटली डू, बंगाल में दे हैव द कैपेसिटी, बिहार यूपी में सम डिस्ट्रिक्ट्स दे हैव. बट देन इफ यू लुक एट अ ह्यूज स्केल में देखा जाओगे ना, तो देन the resources Congress and BJP have ना, उनके साथ टक्कर करना है तो this won't work. We don't have those resources. So they have to shift into some liberal party. BJP जाएंगे तो लोग गाली देंगे, तो they go into Congress, which is like थोड़ा बहुत liberal party ही सही, but थोड़ा बहुत resources and पैसा तो है उनके पास. एंड आपने हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाया है. So I want to ask you this question: how do we judge historical character? Do we judge them by the standards of their time or by the standard of our time? See, once any historical character, when we try to study his life, हमेशा अपने आप को उनके पर्सपेक्टिव से सोचो, वो किस दुनिया में जी रहे हैं, उनका उस टाइम का कल्चर कैसा था, उस टाइम का हिस्टोरिकल कंडीशंस कैसे थे, है ना. अब say for example, say let's take Ashoka, right? He was undoubtedly one of the greatest emperors India saw, है ना. Yeah. He like if you talk about his policies, है ना, the way he built a road network, the way he organized his empire, all of that was like first of its kind. He was one of the first emperors to unite India under one ruler. So उनके लेवल पे अचीवमेंट है. अब तुम बोलोगे देखो वो सब तो ठीक है, पर मोनार्की इज रॉन्ग, डेमोक्रेसी क्यों नहीं लाया, तो तुमको ना तो उस टाइम के हिसाब से सोचना चाहिए. या यू शुड थिंक अबाउट उस पीरियड के हिसाब से, है ना. एंड इवन उस पीरियड के हिसाब से दे वर वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग उनके हिसाब से, राइट. फॉर देम इवन इफ यू से छत्रपति शिवाजी महाराज, ही वाज वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग फॉर हिज टाइम. हां, उनके टाइम में व्हेन पीपल वर फाइटिंग ओवर रिलीजियस लाइंस, ही रियलाइज कि देखो अगर हम ये रिलीजन के नाम पे लड़ते रह जाएंगे ना, विल बी डिवाइडेड. वी वांट टू फाइट अगेंस्ट द ऑप्रेसर, इनको यूनाइट होना पड़ेगा. एंड इफ यू लुक एट हिज ओन आर्मी, ही हैड मुस्लिम जनरल्स, मेजर्स एंड ऑल दैट हु वर हेडिंग द सोल्जर्स. एंड इसे देखो, इट डजंट मैटर उसका रिलीजन क्या है, उसका सोल्जर में मेरिट है. इफ इज अ गुड जनरल एंड इज लॉयल टू मी, दैट्स ऑल दैट मैटर्स, राइट. So you have to see beyond these things, okay? वो अपने टाइम में how progressive were they, and all of these people were actually really progressive. But हम आज के लेंस में देखेंगे, यार उसने युद्ध किया था, युद्ध में इतने लोग मर गए थे, उतने लोगों को क्यों मारा, क्या नॉन वायलेंट युद्ध लड़ेगा क्या उस टाइम? वही तो, अब सामने वाला तलवार से मारने आ रहा है, वहां पे तो पेन नहीं exactly, निकालना चाहिए ना. you have to understand the situations, right? Even Yeah. a lot of people cancel Stalin कि उन्होंने उतने लोगों को मार दिया था. You have to understand कि when the Soviet Union started, no, Russia was one of the poorest countries in the world. उनके पास खाने के लिए they didn't have enough food to feed the people. एक तो इतना बड़ा country है. But then he industrialized that country, जो world में unindustrialized countries में से एक था, biggest country with a lot of farmland, उसको he made it one of the most fastest industrialized countries in the world. Second largest economy in the world हो गया था 20 years के अंदर. That was the kind of progress he did.
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वो किस सिचुएशन में थे. इट्स नॉट लाइक कि उस जमाने में ठीक है इतने लोग भूखे मर रहे थे. इट वाज नॉट लाइक उसके हाथ में कोई पावर था कि मैं पेपर में लिख दूंगा सबको खाना दे दो खाना मिल जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? more complicated Yeah. than that. And even if you look at people like Nehru, okay, I have my criticisms of Nehru, but then उसके perspective से देखोगे ना इंडिया को, when he became the first prime minister, India wasn't rich. We literacy rate was 13% something. यार कुछ नहीं था हमारे पास. We had to come a long way. Yeah. But then he took that vision कि इंडस्ट्रियलाइज करना है, एक सेक्युलर डेमोक्रेसी बनाना है ना. वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो उस टाइम पे सेट हुए थे, दैट दोस आर व्हाट आर एग्जिस्टिंग टिल टू दिस डे. अगर नेहरू की जगह कोई और होता, इंडिया वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट. या वी Yes. कैन क्रिटिसाइज हिम ऑफ कोर्स, बट ऐसा पूरा कैंसिल करना कि ये बंदा पूरा का पूरा गलत था, दैट इज नॉट प्रॉपर. हाँ, बट हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम भी है ना कि हमारे जो भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स होते हैं हम उसको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में देखना पसंद करते हैं. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. कांग्रेस के लिए नेहरू जी इज़ दी थिंग, मतलब बिल्कुल गॉड जैसा है, उनको क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते. इवन गांधी कांग्रेस के लिए बिल्कुल गॉड जैसा है. एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैंने तो सिर्फ गांधी जी के बारे में सिर्फ अच्छी बातें पढ़ी थी. एंड ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन. बट अब जब मैं पढ़ता हूँ तो उनके बहुत ही एब्सर्ड वियर्ड व्यूज सब मुझे पता चल रहा है. सो हाउ डू वी जज गांधी? तो सी एज आई टोल्ड यू, ब्लैक एंड व्हाइट में कोई भी चीज को नहीं देखना चाहिए. देयर इज ऑलवेज हाँ. नुआंस, है ना. किसी को आइडियलाइज नहीं करना चाहिए. कोई परफेक्ट नहीं था. एवरीवन हैड देयर फ्लॉज इन सम लेवल. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कोई परफेक्ट नहीं होता. बट देन व्हेन यू जज अ पर्सन इवन बाय देयर ओन स्टैंडर्ड्स, देयर आर फ्यू थिंग्स जहां पे ना तुम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते. एंड वन ऑफ सच थिंग्स इज यू नो सेक्सुअल वायलेंस जो होता है, राइट. या. एंड इट इज अ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड ट्रूथ दैट गांधी यूज्ड टू स्लीप नेकेड विद हिज नेफ्यूज, नीस जो होते हैं. हाँ, या. एंड जिनकी जो नीस थे, they were अंडर एज गर्ल्स, 15-17 के एज वाले. ठीक है 18 भी मान लेते हैं, बट आई डोंट थिंक उनके जमाने में भी वो प्रॉपर था. उनके जमाने के पीरियड में भी आई डोंट थिंक पीपल वर ओके विद ओल्ड मेन डूइंग दैट विद यंग गर्ल्स. सो दैट्स वेयर आई ड्रॉ द लाइन फॉर मी पर्सनली. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़े बहुत वो कैस्टिस्ट हुए होंगे, थोड़े बहुत बायस्ड हुए होंगे, थोड़े बहुत अनरियलिस्टिक हुए होंगे, ठीक है, दैट आई कैन एग्री विद. बट दिस एक्शन of sleeping with minor girls naked, I don't think it is justifiable in any situation. तुम 1000 साल पहले की बात करो या 50 साल पहले की बात करो या 100 साल पहले की बात करो, I don't think it's appropriate. I don't think we should glorify such a person. My personal opinion. What example are we setting, है ना. हाँ, बट देन उनका तो यूज़ सभी पार्टीज करते हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, इंडिया में इलेक्शंस ना के the way लिए एंड democracy इमेज works बिल्डिंग के ना, लिए. yeah, image building is everything. Democracy, I'll tell you what, these big political parties, they have bigger marketing and advertising budgets than top companies होते हैं. उतना पैसा खर्च होता है. Obviously, it's all image management. Democracy में लोग क्या देखते हैं, इसका इमेज कैसा है. जब लोगों एंड को वन मोर पूछते हैं थिंग, हाँ, आपने एक बार अपने किसी स्टोरीज में मुगल्स को इन्वेडर कह दिया था. सो आई एम श्योर कि आपको ऐसा बोलने के कारण बहुत लोगों ने संघी कहा होगा. सो yeah. कैसा See, फील कर रहे हो वो सुनने के बाद? Mughals का history, I'm very much interested in Mughal history. I think it's an integral part of understanding Indian history. या. So, Mughal history, if you try to understand, so you have this very interesting character called Babur. Babur का असली नाम बाबर नहीं था. Babur means शेर, okay, tiger. He was actually a tiger. If you look at his personality कैसा था, he was a tiger, very या. aggressive, and युद्ध में genius. Like the way he used to fight battles, he used to plan battles. So you have to understand Babur is, there was this very famous ruler called Timur. Huh? Timur बोलते थे. Timur was one of the most expansive and also most brutal rulers in world history. उनका empire तुर्की से लेके दिल्ली तक was such big empire. हाँ, जो अभी उज्बेकिस्तान में समरकंद सिटी है, उनका कैपिटल वहां पे था. एंड ऊपर से he was a disabled person, he was a cripple. Huh? He was called Timur the Lame. Okay, he couldn't walk. He was such a person, but he was like one of the most extraordinary people in history. And उन्होंने ऐसे ऐसे चीजें की है, you won't trust me. He came to India, Delhi, रिले में युद्ध लड़ा था, and he won. He saw कि इंडिया में there are elephants which he can use in war. He took elephants, he went to Turkey. अब उस जमाने में 1000 साल पहले टर्की में किसी ने ना कोई एलिफेंट देखा है ना एलिफेंट के बारे में सुना है, कुछ आइडिया नहीं है. वो आते हैं युद्ध करने, तो युद्ध उनका में बैंड इनके बजा होगा. सामने हाथियां आ रही है,
And this dude, हाथी के tusks पे ना, he used to put poison spikes. He हे was such a भगवान। madman. Huh? And the people who wrote about that war, huh? It's called the Battle of Ankara. पहुंच गया था वो अनकारा में, तिमोर वर्सेस द ऑटोमन एम्पायर उस टाइम का. उनकी जो वहां पे दैट फीलिंग ऑफ द टर्किश सोल्जर्स लुकिंग एट वॉर एलिफेंट्स अगेंस्ट देम, जीवन में उन्होंने देखा भी नहीं होगा वॉर एलिफेंट्स, उनको लड़ना पड़ रहा है उनके सामने. सोचो 1000 साल पहले तुम जानते भी नहीं हो हाथी क्या है. उस टाइम में देयर वाज नो सोशल मीडिया, देयर वाज नो फोटोज, उनको पता नहीं हाथी क्या होता है, उनको खड़ा कर दिया हाथी के सामने, जाओ लड़ो. It was like one of the most brutal people. It was a military genius, okay? And Babur was उसका grandson. एंड बाबर के टाइम में, ग्रेट ग्रैंडसन एक्चुअली, तो बाबर के टाइम में एम्पायर वाज स्प्लिट. उनके मरने के बाद एम्पायर गॉट स्प्लिट. ही हैड सो मेनी सन्स, ही हैड लाइक 70 प्लस सन्स, ओके. तो एम्पायर पूरा टूट टूट के हो गया, बिकॉज़ देयर वाज नो क्लियर सक्सेसर. राइट, सो उस टाइम में जैसे कि होता था नॉर्मल सक्सेशन की, किसी एक को पूरा किंगडम मिलेगा, वैसा नहीं होता था? So the thing is, what you have to understand, in Europe, in Western culture, they had this primogeniture बोलते हैं. इसमें क्या होता है, the eldest son जो होता है, he gets to be the ruler of the whole kingdom. But when you talk about Islamic succession is very clear. All the sons have equal right to inheritance. Right? ओके. So generally क्या होता था, these rulers who had big kingdoms, they used to divide कि ये हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा तुम्हारा, ऐसे. And if you talk about the Mongols, जो जिंगिस खान के Mongols थे, they also had similar ये कि every son will get equal share. And उनका the culture was such कि every son will get equal share, but the strongest son जो होगा वो जीत के पूरा सबको मिला ही लेगा. It always bound to end in civil war. जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको पूरा राज्य मिलना, that's a, जो यूरोपियन किंगडम्स थे, क्रिश्चियन किंगडम्स थे, that was their logic. But Muslims में this doesn't exist. You had always wars of succession. So you had 70 sons who fought. पूरा किंगडम स्प्लिट हो गया था. And उस chaos में there was this person called Babur, was very much like his great grandfather, who aspired to be like his great grandfather. But उस टाइम वहां का chaos इतना था, जो सेंट्रल एशिया, पर्शिया के अराउंड, he wanted to look for a new country to go. He found a base in Kabul, Afghanistan. And Kabul जो है अफगानिस्तान, it is like जो पर्शिया और इंडिया के बीच जो पहाड़ है, it's like the natural border between us. एक तरफ you have the very fertile Punjab, the Punjab area, 5 rivers, very fertile, very populous, very rich. So from Kabul, the first time he came to India was just for plundering. इतना rich valley है, let me plunder, let me take what all I can. And he realized, yeah, scope है, this country has scope. I can actually build my kingdom here. There are like so many people, it's very rich. You find all sorts of fruits, vegetables, everything. Afghanistan, you don't have that luxury. They live in mountains and stuff. So this very Baba was what, 20, in his early 20s, okay. वहाँ पर्शिया में he can't rule. His own cousin betrayed him and sent him here. It wasn't right for him, but he had the loyalty of his men, and he had studied all his ancestors' battles and everything, and he planned to come to Delhi and start his kingdom here. वो आया Delhi, he obviously won very easily. He came with a very small army, okay. And also to note, जो वो you have this thing, right, cannon, क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, cannons, तोप. Cannons को तोप, हाँ. The first person to bring तोप in India and use it was Babur. He got it from the Ottoman Empire. तोप gift किए थे उन्हें. He just came with like 3 or 4. So it is said that in the first battle of Panipat, you had Babur at one side, and you had the Lodi Sultanate, है ना, the Delhi Sultanate at the other side. Delhi Sultanate had more than double the army, and they were sending elephants at Babur. बाबर ने जब तोप चलाया था, वो तोप के आवाज से elephants डर गए, and they trampled their own soldiers. हाँ, so that's how the story goes. Babur came, he starts his empire, but the empire was very limited. Okay, it was just, you know, Western UP, Delhi, Agra side, Punjab to Kabul. That was the area of the Mughal Empire this time. But then Babur यहाँ पे आया, he started his kingdom, but he never accepted India as his own. If you read his own autobiography, वो हर बार he always cries out, I want to go back home. I like this place, but this is not home. I don't feel like home here. The people are different, the cultures are. He always complains about that. Because he clearly saw himself as a foreigner. Okay. He always wrote about how the language is different, how the people are different, and how there are like so many linguistic background वाले लोग इंडिया में. That also confused him a lot. हाँ, वो तो सबको होता है. If you read his writing, he's very much a foreigner. Always क्या ये कैसा जगह आ गया हूँ मैं.
He never saw himself as an Indian. That's why you can clearly say he's an invader, because he saw himself as he described himself as a conqueror. Okay, that's why. But what happened interestingly with the Mughals is, as इनके जो बच्चे होते रहे, they started marrying with the local Indian rulers. So they started becoming more and more Indianized. उनके कोर्ट में जितने उनके एडवाइजर्स थे वो इंडियन बनते गए, उनके मिलिट्री एडवाइजर्स इंडियन बनते गए. तो slowly बाय जनरेशन आफ्टर जनरेशन जहांगीर तक when you came they were completely Indian. जो कहां से आए थे वो कल्चर खत्म ही हो गया था, वो इंडियन में ही पूरे असिमुलेट हो गए थे. It was like that. But then was also a high level of cultural exchange कि उनके जो linguistic चीजें उन्होंने पर्शियन और टर्किक के लाए थे, वो हिंदी में you'll still find words from Turkish and Persian. Turkish and Persian, Persian, Turkic and Hindi have a lot of common words. जैसे हम दोस्त बोलते हैं, दुश्मन बोलते हैं, जंग बोलते हैं, शैतान, yeah, all these Turkish words. I was surprised when watching a Turkish show कि कितने words common है. इतने तो साउथ इंडियन लैंग्वेज नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज में नहीं है कॉमन जितने इसमें. So a lot of cultural exchange did happen. And then you also have architectural here also in India, like the Taj Mahal and all of that. Taj Mahal is very interesting because it's a mix of your Persian, Turkish and Indian architecture. It's a complete mix. That's why it makes it's so special also. The people from other places come and see. So it's like, yeah, Babur when he came, clearly an invader, but with the time of Akbar and Jahangir, completely realized. You have that. ओके, सो मतलब जैसे जनरेशन चलती गई वो फिर यहाँ के लोगों से और यहाँ के कल्चर से आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिए. Very clearly speaking, you had Akbar, right? Yeah. Akbar's mother was Sindhi. Akbar's mother was Sindhi. Really? Yeah. So you had Babur's son Humayun. Humayun, there was this very interesting guy from your place called Sher Shah Suri. Okay. Yeah. Sher Shah Suri from Bihar. Yeah, I know about him. So, yeah. So he was again genius military commander. Defeats Humayun. Humayun India छोड़ के भाग. So what happens is Babur मर जाता है. He has 3 sons. Humayun obviously the eldest. And then you have Kamran and Mirza. Kamran Mirza Hindal. इनको पंजाब, लाहौर और फिर काबुल ऐसे डिवाइड करके चले जाता है. And Humayun is in Delhi. Humayun goes to war against Sher Shah Suri, जो बिहार की तरफ से बढ़ रहा है. His brothers don't help him. Humayun loses. He tries to fight back. He has no support from his brothers. They're like, why should we trust you? Why should we, see you as the biggest son? They betray him. So he goes to Persia. छोड़ के. He stays in Persia 15 years, exile में. उसका यहाँ घर में खत्म ही हो गया. And Persia में, वहाँ का जो शाह होता है, he said, तू शिया इस्लाम में convert हो जा. I'll help you take back India. And after 15 years of staying there, he comes back to India. Okay, so Mughals were Shiites. And then they convert back to Sunni because वो शिया ऐसे ही सपोर्ट के लिए झूठा बोल दिया था उन्होंने. अच्छा. For आज पॉलिटिकल ये के लिए कोई कुछ भी धर्म बदल देता है. हाँ, उसके लिए सब कुछ चलता है. So yeah, they became Shia for a while, then they became Sunni back again. But yeah, that's how they came back. And by the time, luckily, when he came back, Sher Shah Suri was dead. He passed away. नहीं होता ना तो कुछ नहीं कर पाता वो. To be honest. Yeah. Sher Shah Suri again, very important contributions by him. The Indian currency, the rupiah, started उसके. और NH1 जो होता है, the Grand Trunk Road, that was started by him. Yeah, that was the first Indian highway. And interestingly enough, इन्होंने बनवाया जो administrative structure था, Mughals just adopted it उसके बाद. I think Sher Shah Suri was very much Indian, as in he understood India का systems कैसे and what kind of administrative structure will work in India. Currency कैसा वाला work करेगा, तुम्हारा infrastructure कैसा work करेगा. He had a ground level idea. It wasn't like foreign से आया. Was born and brought up here, so he had a clear idea. The Mughals were like, ठीक है, चल रहा है, इसको चलने देते हैं. They adopted it. एंड इन रूलर्स के बारे में तो हमें ये भी चीज़ समझनी चाहिए ना कि बिगेट्री पुराने रूलर्स के हिसाब से मतलब उस टाइम में वो तो चीज़ कॉमन था ना, आना एंड देन प्लंडर करना, मारना. Yeah. That was very common. It was very common in all rulers. You had Mughal से पहले you had Delhi Sultanate of Afghans and all that. They used to plunder. उतना भी क्यों? Even within the Hindu rulers, जो local rulers होते हैं, even when they used to invade other states, they used to plunder. You had say the Satavahanas or something. वो जाके किसी राष्ट्रकूट से attack करते हैं. They capture a city. Plunder used to happen. That's been a part of wars since any country, any culture you go. That is a part of war. Plundering and all that.
इट्स अंडरस्टूड कि ये सब होता है. What you have to understand is, उस जमाने में if you have an army of 50,000 soldiers, तुम खाना कैसे खिलाओगे? युद्ध में लेके जा रहे हो, हाँ? है ना? अब वो लोग युद्ध में जा रहे हैं तुम्हारे साथ, उनको पेमेंट वगैरह देना है, हाँ? सोल्जर्स का खाना, सोल्जर्स का पेमेंट, ऑल ऑफ दिस, है ना? तो लूटिंग एंड प्लंडरिंग सिटीज वाज एन इजी वे कि युद्ध जीत गए, नाउ यू एटलीस्ट लूटेड समथिंग, यू कैन पे योर सोल्जर्स विद दैट, और यू लेट द सोल्जर्स लूट फॉर देमसेल्व्स, और वो चुप रहेंगे, खुश हो जाएंगे, कुछ तो मिल गया उनको लूट करके. यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड कि आज जितना लॉजिस्टिक्स है ना हमारे पास कि खाना फटाक से मिल जाता है और खाना इतना अबंडेंस प्रोडक्शन भी होता है, उस जमाने में यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर वाज नो फ्रिज और एनीथिंग. लॉजिस्टिक्स एंड फूड का वेरी डिफिकल्ट बैक देन, especially fielding this big armies. It's not easy. 50,000 soldiers एक जगह पे खड़े हैं, हाँ? उनका कहाँ सोएंगे, कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, you know, it's back in या the day. बहुत डिफिकल्ट होगा. Yeah. So plundering was very common. एंड राइट विंग से हमेशा ये आवाज़ आती है कि उन्होंने इतने टेम्पल्स को तोड़े एंड उस वजह से अभी हमें उस चीज़ की जस्टिस को डिमांड करना चाहिए. सो डू यू थिंक इज़ इट गुड कि जो टेम्पल्स 400 या फिर 500 साल पहले तोड़े गए थे The thing उनको? is, if you go down that line, no, you हम्म. have to also remember that India में जितने temples बने हैं ना, they were built on Buddhist sites. हम्म. So when Ashoka used to be there, he constructed a lot of Buddhist sites of worship. But then Ashoka, when he was defeated and the new ruler came, was a Brahmin, and he brought back Hinduism to as the main religion. Uh, there are clear records of hundreds of Buddhist places of worship getting converted into Hindu temples. तो उस लाइन में जाना है. तो when Hindus are only to lose, okay, especially South में, there also been recently a temple in South which was proved to be a Buddhist and was returned. But then उस लाइन में जाओगे तो you never know where you will reach. तो तुम जिस मस्जिद से टेम्पल मांग रहे हो, फिर तुम्हारा टेम्पल ही कुछ बुद्धिस्ट का बन जाए. That's one thing to consider. But then also, I don't think, see, for example, मान लेते हैं there is a mosque, okay? It was built over a temple, say 500 years ago. Huh? Now, Yeah. वो पूरे इलाके में मुस्लिम्स रहते हैं. They have been praying there for generations now. अब तुम जाके बोलोगे तुम सब हट जाओ यहाँ से, अभी हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे, मस्जिद को तोड़ के बनाएंगे. So what you're doing is you're just, उन्होंने जो गलत किया था उस पे और एक गलती ऐड कर रहे हो. क्या मिलेगा इससे? अदर देन जस्ट रिलीजियस टेंशंस बढ़ेंगे, लोगों के बीच में दुश्मनी बढ़ेगी, बट कुछ अच्छा क्या होगा इससे? रादर व्हाट इज रॉन्ग विद बिल्डिंग न्यू टेम्पल्स? आई डोंट गेट इट. आई थिंक यू कैन डू दैट, राइट? तुमको वहीं पे क्यों बनाना है? यू कैन स्टार्ट योर ओन न्यू टेम्पल. तुमको वहीं पे क्यों बनाना है? क्योंकि यू वांट टू शो मुस्लिम्स देयर प्लेस. यू वांट टू टेल मुस्लिम्स कि यू आर सेकंड क्लास सिटीजंस, हमारे पास पावर है. दैट्स द मोटो इनका. हाँ, you can always start a new temple. And India में if you want to start a new temple, लोग खुशी खुशी तुम्हें जमीन देंगे. कौन मना करेगा? हाँ, वो तो हो जाता है. आराम से होता है यहाँ. पैसे भी डोनेशन में बड़े बड़े कॉर्पोरेशन तुम्हें आके डोनेट करेंगे इसके लिए. इतना पीपल आर सो रिलीजियस हियर. पर तुमको वहीं पे बनाना है क्योंकि यू हैव टू शो समवन देयर प्लेस कि यार देखो तुम मुसलमान हो, हम अभी पावर में. वो तुम्हें दिखाना है, उनको ऐसे बाहर करना है, इसलिए यू आर ट्राइंग टू प्लान दैट. दैट्स माय ओपिनियन ऑन दीस थिंग्स. राइट. बट मैं थोड़ा सा बस पुश बैक करूँगा. राइट विंग में बहुत लोग बोलते हैं कि हमें सिर्फ ये 2 या फिर 3 टेम्पल चाहिए क्योंकि हमारा बिलीफ है कि वो जो डेटीज़ हैं उनका बर्थ यहाँ पे हुआ था. तो सिर्फ अगर एक लिमिटेड सेंस में अगर किसी चीज़ की डिमांड करिए तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? Limited, the thing is, they just said Ram Mandir 1, right? This was the last, हो गया. Now they're saying 5 more. अभी उनको अपीस कर भी दोगे, मान लेते हैं वो 5 दे दिए, हाँ बोले हाँ कर लो, मंदिर बना लो, वो रुकेंगे क्या? What's the guarantee? या. It's a very bad precedent ना. 1 से शुरू हुआ, 5 हुआ, 5 से शुरू हुआ, 10 होगा, फिर वो 25 होगा, फिर 50 होगा. Makes sense. So let's talk about reservation now. And also one more thing about temples, there are a lot of temples in India, बहुत पुराने, which have been abandoned. कोई destruction नहीं हुआ उनमें, they have been abandoned. कोई को देखभाल नहीं कर Lack रहा of money. है. Yeah. हाँ, मेंटेनेंस पे पैसा खर्च करो, टेम्पल मेंटेनेंस पे, because you know, जैसा भी टेम्पल हो, if it's hundreds of years old ना, it's a part of our history, जो भी बोलो. Yeah. And you have to spend money to maintain it. वो अभी ऐसा क्या बोलते हैं, वेदर के कारण, इसके कारण it's getting destructed, polluted. वो सब try to maintain it, try to preserve it. That should be one of the goals if they want to focus on something. जो एंड हमारे स्पीकिंग temples हैं, ऑफ हाँ नहीं, अगर क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो कि
abandoned है, वहाँ पे Yeah, पैसे yeah. खर्च Even in करने की Odisha, ज़रूरत है। there's so many temples, okay? Very, very old temples, hundreds of years old temples. उनके लिए there's no right funding, dude. Like, preserve करने के लिए नहीं है. You can see it eroding. It needs to, हुँ, so preservation, protection. It's a जो भी बोलो, old part of our history, right? So 500 years old, 700 years old. It's remarkable, but उसको you have to protect it, ना? So if they हाँ, focus more on, say, protecting the temples, कि यार देखो, part of our history getting eroded, है ना, टूट रहा है, कुछ कर रहा है, इसको हमको अच्छे से मेंटेन करके रखना है for future generations, something I'd support. पर तुम कह रहे हो हुँ, नहीं नहीं, जो टूट रहा है उसको टूटने दो, नया बनाना है, वो मस्जिद के ऊपर बनाना है, तो यार मतलब तुमको टेम्पल में इंटरेस्ट नहीं है, तुमको मुसलमानों को कुछ बोलने में इंटरेस्ट है, वो लगता है मेरे को। हुँ, हुँ, हुँ। या And speaking of temples and mosque, do you believe in God or spirituality or any kind of religion? फॉर मी पर्सनली, आई डोंट एडहायर टू एनी वन रिलीजन. आई फील मोस्ट रिलीजन, जब तुम एकदम ऑर्गेनाइज रिलीजन में चले जाते हो ना, they become very restrictive, lot of rules, huh? But I'm हुँ, not हुँ, against हुँ। people practicing religion, mostly. Like, if you've been celebrating Diwali, makes your family happy, बच्चे खुश होते हैं, do it, I don't have an issue. If you do the roza for Ramzan, test yourself, test your faith, do it, हुँ, happy for हुँ। you. Me personally, I don't subscribe to one very specific religion as such, but I do believe there is something in the universe which we don't understand, some presence. I don't know उसको God कह सकते हो, universe कह सकते हो, some power कह सकते हो. I feel there is something. I'm not sure, but मेरे को ऐसा लगता है. But then again, I don't like to prescribe to any one religion. But then again, interestingly enough, if you look at religious scriptures, of say the Buddhist scriptures, for example, Buddhist हुँ, हुँ। philosophy में जाओगे, it's very, very useful, practical, like how to deal with problems in life, how to deal with anxiety, how to deal with overthinking. ये सब psychological problems and solutions you'll find. Not only that, if you look at Muslims, you have Sufi philosophy, right? You have the Sufi saints. इनके, if you read the things they've written, एक तो very poetic, very beautiful writings. Even the songs and all, Sufi songs are still famous India में. जितना भी हिंदू हो, वो कुन फया कुन सुन के ही वो ये होगा, पता हुँ, है मेरे हुँ, को. हुँ। But then, even the philosophy, the kind of ideas and thoughts they had are worthy to be explored. There's a lot of treasure there. वहाँ पे हम समझते नहीं, बोलते हैं हाँ religion है, कुछ तो पुराना होगा, but ना, there's a lot of तुम्हारे लाइफ को genuinely अच्छा करने वाला things you'll find. Okay, हुँ, हुँ, हुँ। even for that matter, the Bhagavad Gita, right? Bhagavad Gita, what is the main message of Bhagavad Gita? That if you look at Bhagavad Gita to its core, the core message is, see, in life, forget about the end goal, do your duty. अपना काम तुम करो, end result के बारे में भूल जाओ. That's ultimately that, right? And for some reason, if you dig deep into other religions, be it Buddhism, be it Islam or something, you'll find the same theme at the end of the day. So I don't think Raja Ram Mohan Roy was wrong when he said, religions are like, cows of different colors, but the milk they give is the same, right? So fundamentally, at some level, I believe the bigger message is the same, but then interpretations are different. The way they get there is different. It's Um, more. I don't believe in rejecting religion. कि वो बहुत ही पुराना है, ये है, गंदा है, उसको निकालो. I don't believe that. I think even in religious scriptures, if you read as a meticulously, objectively, there are a lot of treasures to be found. है yeah, ना? definitely. Yeah. मैंने अभी कुछ दिन पहले नागार्जुन जो बुद्धिस्ट सेंट थे उनका कुछ वर्क पढ़ रहा था एंड उससे पहले मैं उपनिषद पढ़ रहा था. सो दे आर डेफिनेटली गुड, बट द प्रॉब्लम दैट आई हैव विथ रिलीजन इज़ द हिपोक्रेसी, क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि बिल्कुल मतलब आइडियल वर्ल्ड, एंड देन रिलीजन के साथ जो हिस्ट्री एसोसिएटेड है, जो वायलेंस की जो हिस्ट्री है, सो उस वजह से आई ट्राई नॉट टू गेट इन टू रिलीजन. Hey, historically, if you understand something, the way empires worked, the religion was a tool for them. है ना? या. Say for example, Muslim, some say Mahmud of Ghazni. Okay, Mahmud of Ghazni was uh, a cruel person, to say the least. He was the first big plunderer of India. He came to Somnath temple. Somnath temple back then had sandalwood के doors of the temple. He looted the temple. Doors को भी लूट लिया इतना कि अभी उसके, if you go to his क्या बोलते हैं उसको, where he is मकबरा. buried. Yeah, his maqbara in टूम. Afghanistan. या. Yeah, the door of his tombs are the doors of the Somnath temple. It was that bad. Okay, ओके. and then चेंज कर he did लेते. all this. Yeah, he did all this looting.
And you know what he told to the caliph? He wrote a letter to the caliph. Ki dekho, there were a lot of sinful, infidels in the Indian subcontinent. I went there and taught them a lesson, and I converted these many people. That was his justification to look good. He just wanted to come and plunder. He used religion as a justification. है ना? करना है plunder. So religion itself, I don't think it's a tool. You know, rulers will, rephrase it, reinterpret it to make sure they're in power. It's more like that. हाँ, बट जस्ट टू बी क्लियर, आई एम नॉट अगेंस्ट रिलीजन, जिसको जो फॉलो करना है करे. Huh, that is true. I mean, आई I डोंट feel केयर. very they're like very radical atheists. Oh, you believe in religion? They'll start judging you. Huh. And like I also understand. Even Marx understood this. That जो आम लोगों की जिंदगी होती है, it's very tough. Life is not easy. And ऐसे life में you need something to give you hope, right? At the end of the day. So religion acts as that bandage on your wound. भले ही वो spiritual हो, false हो, जो भी हो, but then the function of religion is very real. It gives you hope in your hardest times. And the other very important thing which we forget in religion is that Christianity को पकड़ लो. Every Christian, like जो following Christians होते हैं, they go to the church on every Sunday, communion वगैरह के लिए सब मिलते हैं. तो religion is like across cultures has acted as a tool for community building. है ना? कि humans are social beings and we need some sort of a community, कि कोई group हो जिसके साथ हम साथ में रहें, साथ में बैठे हैं, all that. And religion was one of the tools which was used to bring people together historically. So when you attack someone's religion, they just don't see it कि oh rationally वो मेरे superstitions को question कर रहा है. They see it more as you're attacking my identity, my community and all that. That's the problem. You have to separate these two things. That's why there's so much tension between जो rational liberal लोग होते हैं and then they're like religious conservative लोग होते हैं. Because when the rational liberal makes the accusation कि देखो religion is bad, जो कंजर्वेटिव होता है ही सीज कि यार मेरे को जिस चीज ने मेरे को अपने हार्ड टाइम में सपोर्ट दिया था, फेथ दिया था, मेरे एग्जाम के रिजल्ट से पहले मेरे को जो अच्छा फील दिया था, एंड मेरे जो कम्युनिटी है उसको यूर अटैकिंग, योर आइडेंटिटी को अटैक कर रहे हो, उनको ऐसा लगता है. दैट्स व्हाई दे रिएक्ट सो हार्शली. So once we break down and this, that the functions of religion, the good wale functions, and then you separate out the superstitions and divide it, and then you make a nuanced critique. देखो ये this part of religion is bad. I think most people will agree. I don't think people still think देखो superstition is right. Even right wingers for that matter, they won't be like superstition is right. हाँ, बहुत लोग तो रेगुलरली क्रिटिसाइज करते हैं इन सुपरस्टिशन को. एक दो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे नींबू काट करके कुछ कुछ करो तो फिर कुछ कुछ होगा. ओ माय गॉड. और लाख लाख में सब्सक्राइबर है. आई एम नॉट किडिंग. That's people want easy answers life में ना. Yeah, that's. And I I think was a lot talking of to people my are hate friend. watching it. A lot of people are hate watching it. मैं तो सब मजाक के लिए देखूंगा, हंस लूंगा. मैं तो बस मजे के लिए देखता हूँ. बहुत हाँ, क्रिंज मजे के लगता लिए. है. हाँ, that's crazy. I'm pretty sure अगर रील्स वगैरह में वो सब चीजें देख रहे हो ना, सब हंसते हंसते ही देख रहे हो. यार ये क्या कर रहा है बंदा. कोकोनट से डायरेक्शन निकालेगा, पानी निकालेगा, all that, right? बट उतने सब्सक्राइबर हैं, so I was talking to one of my friend and he said the same thing about God कि God is all about hope. But तभी मैंने उसे ये रिप्लाई करा कि yes, if God is all about hope, but do you know that वहाँ पे कोई है नहीं जो तुम्हें आकर के मदद करेगा. At the end of the day, you will have to solve your own problem. So That ये is hope. true. But then again, the very hard thing to do for a human being is खुद पे responsibility लेना. हाँ, ये तो है. That's really really hard. हाँ? कितना भी बंदा rational हो जाए ना, it's still very challenging. But when you have that, you are a part of something bigger. There's someone out there for you. Even you have Bible verses like, if the world stands against you, understand that God is with you. Stuff of that sort. That gives you hope. If हाँ, you ये see तो है. होप people, तो मिल जाता है. especially people in the army or something, or fighting, they're also like quite religious only. If you look at the writings they've written, they're like, in that kind of brutal, lonely periods, religion is what people find this. And interestingly enough, I don't mean to justify, but if you look at, say for example, you had the Twin Towers पे जो terror attack हुआ था ना, जो लोगों ने hijacking करी थी, the terrorists, if you read about their lives, it's not that they were this extreme Muslim ये.
these were college educated students like you and me, but उनके साथ they felt so disconnected with the world, so ऐसे society उनको reject कर दिया हो, वो एकदम से एकदम lonely हो गए हो, they wanted to find some inner meaning in life, and they slowly started watching this, radical videos, and they fell into that trap, and वैसे 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 they went into that extreme beliefs में, and they did it. And when people, so if you read Friedrich Nietzsche, he predicted this, that when he said God is dead and we have killed him. I love him. I just love him. So what he basically meant is that, see, religion ka jo, the kind religion is a sort of a thing which gives you a kind of a meaning in life, a bigger meaning in life. It's like you have God, is a part of everything, and unke niche you are just one. This somehow there is some sort of an organization. When you remove that uh, illusion of religion, say, and you leave man in this rational world. See, rationality doesn't all that give you meaning. It more confuses you even more. You Yeah, feel like बिल्कुल you have no बिल्कुल. big purpose in life. There's no meaning in life. तुम ये सब ढूंढोगे इधर उधर ढूंढ. तो जब एक इंसान से तुम धर्म ले लोगे ना, किसी और चीज में धर्म ढूंढ लेगा वो. हाँ कल्ट वो में तो चले है. जाएगा. किसी और चीज को ये करने लग जाएगा. They'll fill that void. People want to believe in something. They believe in religion. Historically, they have been believing in religion. If you take that away from them, they believe in something else. Yeah, you're not filling that void. Some people go into extremes, some people go into political ideologies, some किसी और ideology में चला गया. आजकल तो पता नहीं लोग incel बने जा रहे हैं, misogynist बन रहे हैं, incels, पता नहीं आजकल कुछ भी हो रहा है. कोई एंड्रू टेट को भगवान बोल देता है. You have all sorts of things happening these days. So that's the thing. For people now, they need meaning, more or less. As humans, कुछ तो होना चाहिए life में believe करने के लिए, to look up to. And religion acted as that. It was not perfect, obviously. It had its problems. But एक बार वो हट गया, people started questioning things and looking for meaning outside. And they are finding meaning in places where they're not supposed to. And you have problems, right? एंड बहुत लोग फिर नाइलिज्म में भी तो चले जाते हैं. Yeah. So Nihilism, which again, is it's a not good. clear response to this, right? Yeah. आजकल के सोसाइटी में भाई कहाँ तुम्हें मीनिंग मिलता है? It's so the society is so harsh, right? Life is tough. उठोगे स्कूल, फिर 12th का एंट्रेंस एग्जाम्स का पढ़ाई, जेई का प्रेप चलेगा, किसका नीट का प्रेप चलेगा, फिर वहां दोगे, नीट लगे तो लगे, नहीं लगे तो फिर क्या करोगे, ड्रॉप ईयर लोगे, फिर नीट में जाओगे, नीट में इज नॉट इजी, बीकेएम डॉक्टर इज नॉट इजी, 6 years ऑफ योर लाइफ यू स्टडी, फिर उसके बाद बोलेंगे तुम मास्टर्स करो, इंजीनियरिंग के बाद भी लोगों को बोलेंगे एमबीए करो, लॉट ऑफ प्रेशर, फैमिली प्रेशर, फिर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इधर उधर, इट्स सो हार्ड, राइट? एंड देन एंड पीपल देन लुक फॉर और भी, समथिंग. या एंड देन और भी बुरा तब होता है ना जब यू स्टार्ट टू क्वेश्चन कि आप आईआईटी या फिर एमबीबीएस या फिर वो कर भी क्यों रहे हो. व्हाई आर यू या डूइंग ये इट? लाइक व्हाई आर अल्टीमेट पर्पस क्या है लाइफ में? ऐसे ही फिर ये हो जाएगा, फिर मैं शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर वो बड़े हो जाएंगे, ऐसे ही खत्म. दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी टू टेल पीपल. लाइक ये करोगे एंड लास्ट में ना, पीपल वांट टू डू समथिंग बिगर, समथिंग मोर मीनिंगफुल. मीनिंग इज एवरीथिंग. या एंड ये बहुत स्केरी भी है क्योंकि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि देयर इज़ नो गॉड. जैसे कि अभी बस कोई गॉड नहीं है. एंड इफ देयर इज़ नो गॉड देन देयर इज़ प्रोबेबली नो आफ्टर लाइफ. कोई जजमेंट डे नहीं होने वाला है, या कोई सो योर डेथ इज रीइंकारनेशन नहीं बेसिकली है. लाइक अ स्विच ऑफ रूट. तो मतलब कि मैं अगर गया तो फिर गया, या तो क्या फिर बस एग्जैक्टली बस नहीं. खत्म. See, it's that's basically. And I don't want to believe that, it's like scary only. बहुत ज़्यादा. कभी कभी मैं बस रात में यही सोच रहता हूँ कि अगर मैं गया तो गया, मतलब Yeah. ऑल द पीपल आई हैव लव्ड अगर वो गए तो फिर गए. And देयर इज़ नो aren't मीटिंग अगेन. logically, if logically speaking, if this is the only life we have, and जितने मजे लेने इसी लाइफ में मजे लेने हैं, what's the point of being a moral honest person? तुम मालिया बन जाओ, पैसा लो, भाग जाओ, मस्ती करो. यही लाइफ है ना मस्ती करने के लिए. तो देखो ऐसे ऐसे पता नहीं, it's complicated, it's या a बट harsh world. वहाँ, या वहाँ पे तो मैं सोचता हूँ कि चलो यार एटलीस्ट इफ़ आई डोंट हैव एनी इनहेरेंट मीनिंग तो एटलीस्ट आई कैन हेल्प दोज पीपल हु आई लव. कि मेरे अगर Yeah, छोटे भाई है yeah, या फिर yeah, बहन है, yeah, आई कैन डू yeah, समथिंग फॉर देम. आई कैन फाइंड yeah, मीनिंग इन देयर हैप्पीनेस. yeah, true. और यही मेरे लिए काम करता है. वरना आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन. मुझे पार्टी So if you वार्टी. read this, Albert Camus, French philosopher, या was writing about the same. He said, "Okay, life has no meaning. Got it, but you can make your own meaning at the end of the या day." You know? So yeah, whatever makes us happy. It's called absurdism. This philosophy of finding your own meaning, making your own meaning.
So ये again, philosophy has a फिलॉसफी, lot of utility. Yeah. या लोग ऑफ philosophy को कोर्स. डिस करते हैं. I don't know for what. I don't know what people like to talk about Netflix shows and shit. Why don't people talk about philosophy, history? This is so interesting stuff. It makes life एंड better इसको actually. पढ़ाना चाहिए. That is also true. एंड हमारे इंडियन फिलॉसफी में भी तो काफ़ी Yeah, राजनीति स्कूल भी है ना, न्याय exactly. Yeah. और This is a lot of बुद्धिज़्म. mhm. Buddhist thoughts are deep. Like, Buddhist different schools of thought. If you see, हाँ, बुद्धिस्ट एंड uh, उपनिषद्स वेयर बहुत ज़्यादा वो डीप one थॉट्स of थे very तो. interesting Buddhist sort of philosophies is what happened when Buddhism when it went to China. No, you had हुँ, this local Confucian Tao beliefs, and you had Buddhism, which was a new ideology. The इनका बीच में interaction हुआ, mix हुआ. I mean, you have really interesting developments. You'll find if you read वहाँ का the Buddhist scriptures, you'll find themes from Confucianism, Taoism, mixed with Buddhism, and like that is interesting से होते रहता है. That's also something you can look up to. Very interesting thing I was reading is the development of Sikhism. हुँ, So Guru Nanak, when he was developing that Sikh doctrine, he interacted with a lot of Hindu as well as Muslim saints of his time. हुँ, हुँ, सूफियों हुँ, से बात कर रहे थे वो Hindu. You have this rishis and munis. He was talking with them. He was debating with them, discussing ideas with them. Huh? So Sikhism में it gets this idea of God is one God. जो monotheism का जो concept होता है, concept of one God, that it gets from Islam. Whereas this idea of dharma, है ना, of karma, it gets it from हुँ, हुँ. Hinduism, and it tries to make a fusion of both of them, and then obviously एक idea. So very interesting development if you look at Sikhism. है ना? It was the aftermath of the mixture between you have your Indic religious traditions as well as you have your Islamic and Zoroastrian traditions के बीच कैसे you have Sikhism developed. It's very interesting if you read about these things. या एंड इससे पता भी चलता है कि रिलीजन कितना ज़्यादा ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है. Yeah, geography depend करता है ना सर. Lot of mix also in religions. Like religion का हुँ, practice from place to place बदल जाता है. Say for example, my mom used to tell me कि Tuesday को nails नहीं cut करना चाहिए. उस दिन नवरात्रि है, उस दिन chicken नहीं खाना चाहिए. Something like that, right? हाँ, हाँ, हाँ. Then mom also used to tell me कि वो बंगाली है, उनका कैलेंडर अलग है. हुँ, उनका नवरात्रि अलग दिन में होता है, हमारा नवरात्रि अलग दिन में होता है. हाँ, हाँ. तो मैं कौन सा फॉलो करूं? तो वो भी तो हिंदू है, वो नरक जाएंगे क्या काटते हो उनको? So which one? So that's mostly really this all right. पोंगल का भी सेलिब्रेशन एक दो दिन इधर-उधर हो जाता है, अलग-अलग स्टेट्स में फिर हुँ, साउथ में हुँ, आल्सो. प्रैक्टिसेस ऑब्वियसली हिंदुइज्म के अंडर ही आते हैं, बट प्रैक्टिसेस डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. हुँ. एंड डू यू स्टिल फॉलो दोज़ रिचुअल्स? I don't follow any ritual to be honest. The one see, I'm very basic in sort of ritual. तो क्या हो कहने? If I see someone elder than me, like कोई uncle या auntie किसी के घर जा रहा है, I'll say namaste or something. Uh, Say if I meet someone elder and it's like someone, my dad or something, and we respect them, I probably touch their feet, some things of that sort. उससे ज़्यादा I'm not personally as I don't practice anything as such. हुँ. मेरा भी वही है, मैं डिपेंड करता है. अगर घर वाले बोल रहे हैं तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बैठ Yeah, जाता yeah, हूँ, yeah, 5 yeah, मिनट yeah, लग yeah, गया, क्या yeah, प्रॉब्लम है. yeah. Even I don't mind that to be honest. Even my parents are very much Hindu. They practice a lot of rituals and all. Not a lot, but yeah, the basic. दिवाली के दिन में पूजा हो रहा है, जाके बैठ जाओ. It's not gonna hurt you. Ganesh Chaturthi के दिन you have some small puja. How to sit 5 minutes or whatever. मुझे तो सिर्फ़ प्रसाद खाने के लिए बुलाते हैं, मैं तो चला जाता हूँ, ठीक है, आ जाता हूँ, Yeah, क्या yeah, yeah. प्रॉब्लम है? Yeah, and like yeah, all of my Muslim friends like for like Ramzan and stuff, you want to invite me, I'm always there. Bombay में जो भी रह रहा है, if they're listening to this, invite बिरयानी me over मिस for नहीं a होना चाहिए yeah, सिर्फ़. yeah, 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 yeah. Not gonna miss biryani. Huh? हाँ. वेल हमने अब तक तो उस टॉपिक पे बात करी ही नहीं, रिज़र्वेशन पे. सो लेट्स टॉक अबाउट रिज़र्वेशन. व्हाई डू यू थिंक दैट वी नीड रिज़र्वेशन? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एंड देन वी विल गेट इनटू द ईवीएस Okay, रिज़र्वेशन, let's ओके? start with the basic premise behind reservation. Okay, the हुँ, basic premise behind reservation is that India, में, historically speaking, there have been certain communities who weren't allowed to participate in the mainstream. Education institutions से वो दूर थे. They weren't given the opportunities to access them. है ना? Even हुँ, administrative institutions, they were mostly ostracized. So हुँ, now in a new independent India, after 47 we had this independent India, and after 50 we were a republic, we're a new country, and we wanted to make sure कि जो लोग historically जिनको वो chance नहीं मिला था participate करने को, उनके community से भी एक fair representation आए. And that's why you had your 15 and 7.5% का for the SC and हुँ, ST communities. If you look at the population, SCs are more than 15% and STs are more than 7.5. Yet at least ये छोटा नंबर तो at least मान के चला कि कम से कम इतने तो आ जाए सिस्टम में.
So these communities were not historically represented. To ensure कि इनका भी representation हो, parliament में representation हो, education institutions में representation हो, government offices में representation हो, they started this. And it only was for government institutions and government offices, right? Private में तो no one does it. So it was a very minimum effort, if you ask me. So that was the rationale behind it. कि इतने सालों तक इनको नहीं मिला है, let's make sure उनको भी we give them a seat at the table, right? That was the idea behind it. They also feel they're part of the system. है ना? If say these जो already disenfranchised, marginalized groups हैं, and they obviously come under the government is the one who makes rules ना. If the government institutions में सब upper caste वाले रहेंगे, they'll feel even more alienated. Let's make sure कि उनके community से भी कोई ना कुछ लोग let them be part of the government, so they'll feel more included. गवर्नमेंट है मेरे लिए कुछ गवर्नमेंट सीट्स रखा हमारे लिए, हाँ, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफिस में हमारे लिए कुछ सीट्स रखा, they'll also feel good कि okay, we are part of the system, because these people weren't meant to be a part of the system पहले, they were always kept outside the system, outcasts that they were called, ना, to make them included, reservation was a means. And why does it have to be by caste and not by economic status? See, again, the rationality of reservation is not that कि no, a poverty alleviation scheme नहीं था ये, yeah? It was to ensure that certain community के लोग, rich or poor, is a different matter, but they get represented. That community gets represented. That was the idea. And I don't fundamentally have a problem with reservation for poorer people, poorer sections of society. I understand कि, you know, when you're poor in India, especially you're poorer than a specific income level, तुम्हारे लिए opportunities will be very less, because you know people have more money, they have access to more resources, they go to best coaching centers, उनके लिए life will be fair, you're not fair, therefore for you also I'm okay with, you know, for them some push, some government assistance. But then again, reservation का the logic behind reservation wasn't poverty alleviation, it was representation. एंड कास्टिज्म की हिस्ट्री इंडिया में, डिस्क्रिमिनेटरी कास्टिज्म की हिस्ट्री कहाँ से आप ट्रेस कर सकते हो? सो कितने पुराने टाइम से, कितने हजार साल से ऐसा चल रहा है? So if you look at the way caste started, if you can from the Vedic period onwards, the Rig Veda and all of them were Rig Veda for the first Veda to be written, okay? इस टाइम में they were only 3 castes per se. नहीं, उससे starting there were only 2. There were only Brahmins and the Shudras. Brahmins were the priests and Shudras were the non-priests. Kshatriyas and all came way later. When it started, it was very so there were no clear lines. Okay, very vague था. फिर उसको rigid होने के लिए, you know, the structured Varna system of, you know, you have your Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, that structure जो आया था, it happened very much later. Because when religion got more and more organized, these structures also got more and more rigid in India में. So starting when Hinduism started, more of it was mostly philosophical. And if you look at the Vedas and all, no, it's basically like poems written very various things, like, you know, horses का, cattle के बारे में, what do you do when you know you got a new cattle, something of that sort. या मतलब मैंने भी पढ़ा, सिर्फ नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं. They were the poets of the nature. So what I understand is that back then ना, there were semi-nomadic societies. है ना? The wealth was based on cattle. हम लोग cattle को graze करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. Semi-nomadic structure था. And cattle was the main source of wealth. And even wars were fought on horses, chariots and all that. So the writings were surrounded on these themes only. But then when semi-nomadic से हम लोग proper feudal में आ गए थे, हम लोग settled हो गए थे, then we had stratification. You had merchant class, you had priestly class, and then priestly class always was there, but then the kings, no, पहले in semi-nomadic societies, what was the ruler जो होता था, semi-nomadic societies में, it's more like someone is chosen to be a ruler of the it's not even a ruler, is not the right word, it's like the head of the nomadic tribe basically, ऐसा होता था. But when you settle down, then you had hereditary based kingship, जिसमें the king, उनका बेटा या उनके बच्चे, उनके family से. Then you had the Kshatriya class clearly developed. So it didn't happen ऐसे रातों रात. It happened over a period of 1,000 years that caste got rigidized. Caste question starting में start हुआ काफी vaguely. Then बीच में they were like, you know, let's say Varna कि हमने occupation based करते हैं. But then वो occupation based इतना rigid हो गया कि वो occupation ही by birth हो गया था. So it gets very complicated उसके बाद. But then
after that rigidization happened, it was very much no mobility wala situation ho gaya tha, that if you're born into a certain class, for you to get out of that, say you're a certain kind of Shudra and your family has been barbers, मान लेते हैं. For हम्म, you to find employment outside being a barber was completely, it was like almost impossible. तुमको इधर गांव छोड़ के कहीं और दूर में जाओगे करोगे, या फिर तुम वहां रहोगे, तुमको वही बनना पड़ेगा. It was like that. It हम्म. became so rigid. But then that happened over a period of time when caste structure got rigid. एंड फर्स्ट मेंशन इस चीज़ का बाय बर्थ का कौन से स्क्रिप्चर में है, एंड द डिस्क्रिमिनेशन का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इन See, वर्णास के बीच thing में. which is interesting is if like some scriptures which say कि देखो it's all based on occupation and all that. Huh? But हम्म, then the other scripture you'll find notions like देखो if you are like a Brahmin woman, you should not marry Shudras or something of that sort. Huh? हम्म, And they're like rules, caste के अंदर ही marriage होना है. Huh? Things of that sort, which very clearly outline the birth-based nature of these things. Manusmriti हम्म. is famously काफी birth-based होता है, but then there are other scriptures. So it's, if you look at the time period, you can track if like when caste was not that rigid, you can find some scripture जहाँ पे people are talking about अपने कर्म के हिसाब से, अपने occupation के हिसाब से caste divine होता है. But then as you move ahead and caste is more rigid, you'll find very very particular birth-based notions of caste. या यहाँ सो पे जैसे intermarriage जैसे हमारी allowed नहीं है. सोसाइटी फ्यूडल होती गई वैसे वैसे जो भी या टेक्स्ट लिखे जाने लगे वहाँ पे हाँ वो हाँ, जितना बढ़ते गया. फ्यूडल हुआ, जितना ऑर्गेनाइज्ड हुआ रिलीजन, है ना, you had a हम्म, rigid clergy religious organization हुआ था, and these also got very strict and rigid as time went by. But then हम्म. again, India में there is a period in Indian history when you had two very famous religions pop out. They're not even religions. उस time when they started, they were philosophies: Buddhism and Jainism. Buddhism हम्म, and Jainism fundamentally were questioning the structure, so the social structure, which was the Hindu social structure back then. हम्म, They were questioning कि यार ऐसे क्यों कर रहे हो? You don't have to treat people as caste groups. You can treat everyone the same. These were very fundamental to both Hinduism and Jainism when they started. And there was a हम्म, time when Buddhism was one of the major religions in India. Like over 30-40% people were following it. And those people happened to be from the lower castes because उनको Hinduism के अंदर उस time उसके contemporary Hinduism के अंदर they weren't given a chance to be to be socially mobile कि ऊपर जाए stature में. Buddhism was giving them a better opportunity, so that mostly people converted to Buddhism. But then you also हम्म. saw, so when early Hinduism started, it didn't actually have prescriptions about कि veg खाना चाहिए, ये सब खाना चाहिए. पहले तो And सैक्रिफाइस होती थी. yeah. Interestingly enough, they had a big remarketing thing Hinduism में over the period. There was like, oh, people are converting to Buddhism and Jainism. We have to bring them back. कुछ तो करना है. Huh? हम्म, हम्म, हम्म. So they started, vegetarianism and all that came into Hinduism उस time पे. ये So आइडियाज़ there was a पहले जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म से में ही थी ना, yeah. वेजिटेरियनिज़्म की. Jainism is like still a very important part of vegetarianism. Still an important part of Jainism, right? Still, या. वो तो आलू भी नहीं खाते हैं. It's still to this day. Huh? Yeah. Hinduism, after these came up and challenged Hinduism, you had these vegetarians and all that pop up in Hinduism. So हम्म. counter करने के लिए. So like Dr. Ambedkar said it rightly, there's a conflict between these two, Buddhism and Brahmanism. है ना? बट इट्स अ Because गुड थिंग कि इंडिया में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा कभी वायलेंट नहीं हुआ. no. Historically speaking, there was a lot of violence too. Huh? ओह. See, when Ashoka was there, Ashoka was converted to Buddhism. Buddhism spread widely during his period, and he was responsible for sending Buddhist missionaries to China, to Sri Lanka, to Myanmar, Burma, Thailand, all these countries. How are the Buddhists now? Because Ashoka took a huge effort in spreading Buddhism. Huh? हम्म. Ashoka, his own son, went to Sri Lanka या. to spread the word of Buddhism. So he had very interesting stories there. But then Ashoka के गुजरने के बाद his empire broke down, and one हम्म. of his generals, I think they were the Shungas, if I'm not wrong, या when they came to सुंगास. power, Shungas were very Brahmin, very Hindu, and they undid a lot of this, and there was a lot of breaking down of Buddhist places of worship, converting them into temples. All that happened violently also. हम्म. There was violence this time, and there's records of that violence too. सो ये जो मिथ है वो उतनी ज़्यादा सच नहीं है.
What myth? कि सब कुछ हमारे यहाँ सब कूल था, रिजन Who के नाम पे said that? वायलेंस नहीं होता था। वो सिर्फ वो राइट विंगर लोग होते हैं, वो उनका पता नहीं क्या दूरदर्शन वाला हिस्ट्री देख के बोलते हैं वो लोग। Like anyone who या read Indian history थोड़ा in depth knows wars were always part of the subcontinent. या Yeah, before Ashoka also brutal होता। Gupta Empire when the Greeks came to India कितना बड़े-बड़े युद्ध होते थे। या You have to understand Indian armies were big of the time, right? India was like the second most populous country in the world उस time also after China. हमारे armies भी उतने बड़े-बड़े थे। या आई मीन युद्ध भी अलेक्जेंडर ऐसे द ऐसे ग्रेट भाग गया देख yeah करके। yeah 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 they said ही hundreds of रैन more अवे elephants मतलब yeah कंप्लीटली yeah and then Indians were also very वॉर लाइक पीपल। expansionary अरे say for example uh, Indonesia right Indonesia had Hindus there Hinduism there वो ऐसे या by fluke हिंदू नहीं बने हमने इनको हिंदू बनाया जाके Indian हम्म armies we built a navy so strong we went to Indonesia conquered it huh? we went to Vietnam conquered it Vietnam तक पहुंच गए थे मान लो Vietnam is so far huh? The Chola Empire you had the Kalingas also who were very strong navalistically used to uh, go to Indonesia Thailand all these places एंड yeah, we इवन already had the राजेंद्र sea चोला वो भी तो बंगाल होते हुए आया था गंगा का पानी लेने के लिए, एंड देन yeah 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 इंस्क्रिप्शन बहुत ही मतलब अमेजिंग है। yeah वो it वहाँ is पे यार हंस रहा है कि मेरा जो वो है वो बिल्कुल भगीरथ जैसा हो गया है, एंड मैं यहाँ से पानी लेकर के जाऊँगा। so yeah इट्स you know, मतलब बहुत फनी है। उसका क्लेम था कि वो सोलर डायनेस्टी से है जो कि लॉर्ड राम का है, एंड देन ही इज क्लेमिंग कि जो भगीरथ है मैं मेरा जो यश होगा वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा या तुमसे ज़्यादा होगा, एंड देन see ही ऑर्डर्ड one हिज of the आर्मी टू very कैरी द वाटर। one of the very interesting things in Indian yeah is that all of them they claim to descend from Lord Ram, है ना? Even the हम्म Marathas, जो इतने Marathas started in like what 17th 18th century, उन्होंने भी claim किया है ना वैसे सोदिया इससे है ना राम या के कुल से because it gives you legitimacy. And it's not just in India. If you say even the Muslim caliphates में if you see everyone claims कि हम Prophet Muhammad के line से आए हैं, हम्म सैयद हैं हम, हाँ? And then later on when Timur thing happened, everyone claims कि हम जिंगिस खान के ये हैं. Huh? I mean, that might be true because Genghis Khan had a lot of sons, so possible. Huh? So, so if you go to like a lot of places, like people claim ancestry from big people. आई मीन या अगर स्पेस से हम एक पत्थर फेंकेंगे तो वो जिसके सिर पे गिरेगा वो चांसेस हैं कि वो चंगेज खान का ही डिसेंडेंट है। Genghis Khan had a lot of descendants. That is true. या Yeah. वेल कुछ दिन पहले आपने स्टोरी पे डाला था कि यू थिंक दैट EWS रिजर्वेशन इज डिस्क्रिमिनेटरी, व्हाई डू यू थिंक दैट? See, the thing is, the logic for EWS which they have given is that it's for economically not well off people, right? या So when you're saying economically जो poorer है उनको देना चाहिए, तो आर यू इम्प्लाइंग कि जो बैकवर्ड कास्ट्स होते हैं हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कास्ट इनमें क्या लोग पुअर नहीं है देयर आर आल्सो पुअर पीपल विद इन दीस सेक्शंस राइट या सो इट वुड बी फेयर सेइंग कि ओके वी नीड 10% ऑफ रिजर्वेशन फॉर पुअर बट लेट अस कीप इट क्रॉस सेक्शनल समथिंग लाइक दैट हम्म दैट वुड मेक सेंस बट यू से 10% but only for general then it doesn't make a lot of sense for me राइट बट मैं अभी थोड़ा सा उनकी साइड लूँगा जस्ट फॉर द Hmm. सेक ऑफ आर्गुमेंट। मे बी इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो OBC या फिर SC ST है उनके लिए पहले से ही रिजर्वेशन है, एंड दैट इज़ वाई ये जो जनरल कैटेगरी है उनके Yeah, सिर्फ जो you पुअर can keep लोग it हैं cross उनके लिए sectional सिर्फ ये right cross स्पेसिफिकली sectional will चाहिए। solve the problem if you keep it cross sectional say for example 10% मान लेते हैं या हाँ तो से तुम्हारा एससी का रिजर्वेशन है 15% 15% का 10% 1.5 एससी में पुअर के लिए रखता हूँ एससी में 7.5 है उसका 10% एसटीज में पुअर के लिए रख दो ओबीसी में कितना ओबीसी में 27 कितना होता है 27% होता है उसमें 10% 2.5 उनके उनमें पुअर के लिए रख दो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट रखो या एंड बाकी जो बच गया उनमें यू कैन से उसका 10% 5% यू कैन गिव इट लाइक दिस इट्स मोर बैलेंस राइट एवरीवन का पुअर में यू गेट अ चांस या बट अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट उनके लिए SC ST एंड OBC मैं उनके लिए बोलना प्रेफर नहीं करूँगा, बट अपने उन लोगों के लिए भी तो पहले से रिजर्वेशन है ना। but it's not for on economic lines right या yeah so when बट you're वो making an जो argument for प्रॉब्लम economic थी here वो तो एड्रेस हो रही है ना।
How? मतलब दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी ना, क्योंकि अगर उनके Say लिए for example, you are a poor ST person. हम्म How are you getting an opportunity इसमें? इसमें नहीं, जो मेरे लिए पहले से जो रिजर्वेशन है मुझे उसके थ्रू तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना। But again, what you're basically saying is SC, STs में poverty doesn't matter, but general people में poverty is a factor. नहीं, ऑफ कोर्स इट मैटर्स फॉर एवरीवन। Yeah. So if we agree that it matters for everyone and it affects everyone and it should be for everyone, right? Simple logic. हम्म And also one more very technical problem I have is the 8 lakh per annum income criteria. I 8 think लाख 8 लाख so. इज Yeah, 8 lakh. The income criteria for EWS, अपना family का जो annual income है, it should be less than 8 lakhs per annum. 8 That's लाख like ज़्यादा almost नहीं हो everywhere. गया? हाँ, बहुत ज़्यादा ही है ना. बहुत That's a ज़्यादा है। lot in a country where the per capita GDP is so less. 8 lakhs is a lot. या आई मीन बहुत बहुत ज़्यादा है 8 बहुत ही लाख। ज़्यादा है. अगर आप टियर 3 सिटी में हो, सो 8 लाख इज बेसिकली यू आर रिच। Yeah, exactly. है ना? 8 lakhs is more than बिल्कुल। 50,000 a month, na dude. या Yeah, how does it make sense? 8 lakhs. क्या एंड economically poor? आपने वो परसेंटेज वाला भी कुछ बताया था, सो मैं काउंटर आर्गुमेंट आपको इसलिए प्रेजेंट कर रहा था कि आई वाज होपिंग कि नहीं, आप वो जो परसेंटेज वाला वो the percentage wala thing, there was a correction to be made, so I took that ओके। story off. But yeah, the cross-sectional thing makes more sense logically speaking. हम्म। Rather than just ओके। keeping it for like general के लिए poor, acknowledge the fact that poor people can be of any caste, हम्म right? Because caste reservation में हुआ था, it was not based on economic lines, right? It was based on caste lines. Now, if you're या adding an economic factor to this, acknowledge कि within castes also there are economic factors to be seen. आई अंडरस्टैंड नाउ। Uh, say, I'll give you a better example to understand. Say, for example, tomorrow government is like 30% of the seats should be for women, या right? आप तुम्हारा जो 50% जनरल का बचता है उसमें से 30% वुमेन को दे देंगे और बोलेंगे सिर्फ जनरल वुमेन आएंगे इसमें. But does it make sense? नो Exactly. You need to have उस time when you say 30% for women, cross sectional 30% is the best way to do it. है ना? या जो SC में जितने हैं उनमें से 30% SC वुमेन के लिए रखो, ST में जितने उनके लिए 30% ST वुमेन के लिए रखो, OBC में जितने उसके 30% OBC वुमेन के लिए रखो, एंड जितने जनरल के लिए बचते हैं उनमें से 30% जनरल वुमेन के लिए रखो. थिंक सिंपल. अगर तुम सीधा 50% 30% वुमेन के लिए निकालोगे, वो भी जनरल वुमेन के लिए, जनरल लड़के एक तो हड़ताल शुरू कर देंगे बहुत ही बड़ा. हाँ एंड जनरल गर्ल्स में तो वाह 30% इज नाइस. वेल आई गेट योर पॉइंट। एंड लास्ट टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा प्रोस्टिट्यूशन पे, क्योंकि मेरे एज के बहुत सारे लोग दे थिंक कि प्रोस्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट चॉइस, एंड आई ऑलवेज रिप्लाई कि इज़ इट फॉर मोस्ट ऑफ देम। मतलब आर दे पैशनेट अबाउट प्रोस्टिट्यूशन, या फिर उनके पास कोई चॉइस नहीं इसलिए उनको उस एक्ट में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, उस वर्क में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन प्रोस्टिट्यूशन? सो आई हैव रेड people who have went and interviewed people in Sonagachi. Sonagachi is Kolkata ka biggest red रेड light लाइट area एरिया। and Asia's one of the biggest red light areas. वहां पे the girls who do it, they're either from two backgrounds, okay? One, विलेजेस से जो families, जैसे फॉर एग्जांपल बाप ने took money, unable to pay the debt, है ना? तो वो अपने जो 14-15 ईयर्स की लड़की होती है वो लड़की को ले जाओ, मेरा माफ कर दो डेट, है ना? उस टाइप का एक तो गिव ऑफ, है ना? सेकंड, लड़कियों को किडनैप करके लिया जाता है, स्पेशली फ्रॉम रूरल एरियाज में सबसे मार्जिनलाइज वाले लड़कियां होते हैं, दे विल बी इजी टारगेट्स टू किडनैप, राइट? जैसे रोड पे सोते हैं, गरीब होते हैं, उनको लिया जाता है. और थोड़े ज्यादा इफ यू वांट गो फॉर प्रीमियम प्रोस्टिट्यूट्स, दे आर बेसिकली द रिक्वायरमेंट इज उनका स्किन वाइट होना चाहिए. So they get from Nepal, वहां से they kidnap women. हाँ, women को job का guarantee देके लाया जाता है. This is one group जिनको forcefully for some circumstance they are pulled into this. The second category is the children of prostitutes. If a prostitute gets pregnant, उनका बच्चा the society won't accept in any other profession. They are bound to join the same profession. And also, if you look at the kind of work they're supposed to do वहाँ पे, like sleep with 8 to 10 different men in a day. हाँ? मतलब 100-150 रुपये में they have to do this. Otherwise उनका घर नहीं चलता. Apart from that, there is that establishment, right, जहाँ पे the thing happens, the brothel.
अगर वो 100 रुपए कमाते हैं, they hardly get to keep 30 rupees in that. Most goes to the this. एंड मेंटली एंड फिजिकली कितना डैमेजिंग It's होगा. it's 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 brutal. Can't imagine, या है ना? And the बट worst देन part पीपल is, से इट्स ऑल and the अबाउट worst चॉइस. and the worst part is when these girls try to escape, है ना? तो say for example कोई किडनैप करके लाए हैं उसको, उसका 1-2 वीक हुआ, 1-2 महीना हुआ, she's trying to escape, he tries to run off. There have been cases जहाँ पे she goes to the police station and she tells them कि I'm from Sonagachi, I'm a prostitute, I want to run, please help me out. The police उसको चुप करा के पुलिस खुद को उसका गैंग रेप कर देते हैं. It's that bad, हाँ, है ना? तो it's a very very bad situation there. एंड जो भाई ऐसा जो बोले चॉइस है ना, लाइक आई डोंट थिंक दे थिंक रैशनली. कौन ऐसा बंदा को इसको देख के चॉइस बोलेगा? आई आई डोंट नो मीन ऑनेस्टली. मतलब जिनको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है तो वही एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली. अल्ट्रा प्रिविलेज्ड होंगे ना वही बोलेंगे हाँ, कि इट्स ऑल अल्ट्रा अबाउट प्रिविलेज, चॉइस. या इट्स ऑल अबाउट चॉइस. आई मीन नहीं, सच एट में वन क्या चॉइस है. साइड सी वन साइड जैसे कि कंसेंट होना चाहिए, वो है ना, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए सेक्स से पहले. कंसेंट शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड कंसेंट, एंथुसियास्टिक कंसेंट, कनेक्शन होना चाहिए लोगों के बीच बिफोर सेक्स. एक साइड तुम ये बातें कर रहे हो जो अच्छी बात है, कंसेंट शुड बी देयर, इट्स इंपॉर्टेंट. बट द अदर साइड यू आर सेइंग कि देखो दिस इज आल्सो चॉइस. कंसेंट कहाँ है? कंसेंट वहां पे, इज इट इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इज इट एंथुसियास्टिक कंसेंट? वहां पे डोंट गेट या टू चूज कि मैं आई स्लीप विद दिस पर्सन, आई वोंट स्लीप विद दिस पर्सन. वही ना, उनके देयर इज पास नो चॉइस ही चॉइस नहीं उसमें. रहती. वही ना. And also the sex is not like it's some good sort of a sex where he respects you and all that. He treats you as an object. When the sex buyer जो होते हैं, they don't even see these women as human beings also. They're treated as some object. या Sexual played all for them, है ना? So yeah, it's brutal only. वेल आई थिंक ये यहाँ पे एंड कर देना चाहिए. आई वाज Oh होपिंग yeah. कि हम सिर्फ 50 मिनट क्रॉस कर जाएं बट देन यू आर सच एन अमेजिंग स्पीकर. Yeah. Thank you, man. It was fun with you. A lot of good topics we have covered. या And I एंड appreciate थैंक यू. the questioning and pushback. Makes me think more clearly, come up with counter या arguments and all. एक्चुअली मैं ज़्यादा पुशबैक करता नहीं बट इस बार से मैंने हाँ. सोचा कि यार आप थोड़ा पुशबैक करना चाहिए थोड़ा Yeah, मोड़ा. yeah, yeah. That's good. That's good. तो थोड़ा और क्योंकि क्लैरिटी मैं बढ़ता है for the people who are हाँ listening. वो क्लैरिटी देयर. क्योंकि मेरा पॉडकास्ट का सिर्फ आइडिया ये है कि मुझे आइडिया सुनने हैं एंड देन अगर मैं वहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो फिर उसका मतलब What's नहीं आता the ना. आप जो बोल रहे हो YouTube मुझे name? समझ में भी नहीं आ रहा. Exactly. It's इसलिए right to ask questions. What is the name on YouTube? द स्केप्टिक शो. Oh, I heard about this. यू हैव. Yeah, yeah. I've got only 290 subs right now. It's all right. You'll get there. You know. Yeah, I will get there. Once I you am once sure of the it. episode is on, let me know. I'll post it on my हाँ हाँ. page. Like, या ऑफ कोर्स. एंड थैंक यू सो मच. yeah, आपने yeah. एक्सेप्ट It करा was एंड fun. देन आपने इस कॉन्वर्सेशन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड एन्जॉय दिस अ लॉट. एंड Yeah. यू आर सच अ ग्रेट लिसनर. यू शुड स्टार्ट अ पॉडकास्ट सच में. Yeah, we are on works for that. आई So मीन इफ yeah, यू नीड एनी हेल्प जस्ट लेट मी नो. आप sure thing, बहुत ही sure अच्छे thing. स्पीकर हो. And let me know if we can collab on some other topic in future. We can do that as well. या ऑफ कोर्स आई एम Yeah. करेंटली आई एम स्टडिंग रिलीजन मतलब Hmm. लाइक प्रॉपर एकेडमिक स्टडी. तो होपफुली मेरे पास कुछ कंटेंट होगा एंड देन आई एम आल्सो डूइंग सम ये रिसर्च ऑन इंडियन फिलॉसफी लाइक जब Hmm. चारवाक एंड द न्याय. सो उस Hmm. पर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट अगर करना हो सो प्लीज़ लेट मी नो. Yeah, आई yeah, बी हैप्पी sure टू डू thing. इट. Yeah, yeah. या एंड थैंक यू सो Cool मच then. फिर See से you. एंड Yeah. आई विल से यू Friend of mine, कुछ she's टाइम बाद. doing a PhD on uh, नो नो religious नो 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 practice. आई एम जस्ट अ ग्रेजुएट स्टूडेंट. अभी I'm मैं just बीसीए telling कर you. रहा हूँ थर्ड I'm ईयर. just telling. If you want to talk about religion and caste in specific, या there's this friend of mine. She's doing a PhD in religious practice in India and how it differs based on caste. Okay. ओके. Yeah, and you can get her on board and take her या interview. She's आई वुड लव brilliant. टू I think टॉक she's टू an हर. expert in the field. I'll give you a contact if you want. But yeah, या आई वुड लव टू टॉक टू हर. yeah. Yeah, and thank you so much Sure. once again. Yeah. And I will see Have you a good some day, other man. time on this podcast, hopefully. Yeah. Yeah. Sure thing. Okay. Bye bye. Bye. I hope all of you enjoyed this conversation. If you did, then please don't forget to like this episode and share it on social media. If you have any comments, then आप उसको भी नीचे comment section में छोड़ सकते हैं. अगर आपको ये podcast audio format में सुनना अच्छा लगता है, then we are available on Spotify, Google Podcast और बाद बाकी सभी major podcasting platform पे.
तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू एंजॉय लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट इन वीडियो फॉर्मेट देन हम यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप हमें वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो लक्ष्य ऑन इंस्टाग्राम, उनका पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड एज ऑलवेज हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, अगर आप हमें वहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड, बाय।